Respected Principal Senaji, Kendriya Vidyalaya Deepatoli, respected teachers of Kendriya Vidyalaya Deepatoli, respected parents and VMC members, media personnel, staff members of Deepatoli, and dear children. Dear children, I would like to convey a lot of greetings to every one of you at the occasion of this prize distribution ceremony for the year 2014-15. Lot of appreciation and love to those who fetch prizes. There are few those who fetch not only one, two, many prizes even. So lot of appreciation and love to all of them. My lot of love to those children also, those who could not make it. Because my love towards the children goes unconditionally. I love you because you are the part of Kendriya Vidyalaya Sangathan. You are the part of our school, you are the part of our family. Because of my job, I get an opportunity to talk to large number of children and teachers very often and almost regularly. In a year, I may be talking to more than 10,000 children. I may be talking to more than 1,000 teachers. But celebrations like this are special because this gives me opportunity to talk to the parents also. You see, whole gamut of the school is designed to bring out the whole potential of your child. And I would like to congratulate every parent that your child is a part of this wonderful organization. Kendriya Vidyalaya Sangathan or Kendriya Vidyalaya are highly esteemed schools under Ministry of HRD, and as far as government system is concerned, we are considered as the pioneer, we are considered as the pace-setting organization. And credit for this tradition goes to all those teachers like Mrs. Tigga and many more who have toiled hard, who had took lot of pains in spite of all adversities. They showered their love to the children so that one day the child can come out with full of her or his own potential. However, nowadays, the atmosphere, the environment in the Vidyalaya has changed a bit, and you would find, and I can also see the change, then there is lot of emphasis on grades, lot of emphasis on performance, and the real enjoyment of being in the school is actually missing. बच्चा जब स्कूल में आता है तो आने के साथ ही उसके ऊपर एक परफॉर्मेंस की जो प्रेशर है वो बन जाती है, which is somehow I would like to talk elaborately on this matter to not only with the teachers but to the parents too. कि performance has its own importance, but our main emphasis in the Vidyalaya is, which is my appeal to the teachers also, that Vidyalayas are not only for the grades कि बच्चों के पीछे हम सिर्फ ग्रेड्स की बातें करते रहें और बच्चों के ऊपर एक अनड्यू प्रेशर बना रहे। बच्चों का एक्सपीरियंस इस विद्यालय में पढ़ने का एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस बने, ये भी हमारी कोशिश होनी चाहिए।
So it is not all about, school coming is not all about marks and grades and CGPAs and all that. School coming is about many more things, many bigger things even. कि यहाँ पे जो बच्चा आता है वो यहाँ से क्या क्या सीख के निकलता है, किस तरह का इंसान बन के वो जाता है, वो ज्यादा मायने रखता है. There is a saying कि people are not being assessed by what they have, but are being assessed what they are. और इंसानों की परीक्षण इससे नहीं होती कि उनके पास क्या है, वो क्या है, वो खुद क्या है, वो कैसे हैं, ये बात बहुत जरूरी होती है. And this I can tell you from my personal experience of teaching and personal experience of being a parent. So being a parent, there is one thing which, rather there are two things which I would like to tell you. कि please understand this thing. School alone is not sufficient to bring out 100% from your child. Your role is also important. एक छोटी सी स्टोरी इस कॉन्टेक्स्ट में मैं कहूंगा. Once a father and a child was moving, they were walking on a road. तो रास्ते में उनको एक पत्थर मिलता है और फादर बच्चे से कहता है कि बेटा जरा इस पत्थर को हटाने की कोशिश करो. बेटा उस पत्थर को हटाने में लग जाता है. ही ट्राइड ए लॉट, बट पत्थर थोड़ा भारी था और वो बच्चा उस पत्थर को नहीं हटा पाता है. वो कहता है कि नहीं नहीं, पूरी जान लगाओ, पूरी ताकत से इसको हटाने की कोशिश करो, यूज योर फुल स्ट्रेंथ. बच्चा अपनी पूरी ताकत लगाता है, पूरा पोटेंशियल बच्चा अपना लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस पत्थर को नहीं हटा पाता और वो कहता है कि नहीं, मैंने पूरी ताकत लगा दी, आई हैव यूज्ड माय फुल पोटेंशियल, फुल स्ट्रेंथ, लेकिन अब मैं इसे नहीं हटा पाऊंगा. तो जो उसके फादर ने उससे कहा वो इंपॉर्टेंट है. उसने कहा कि नहीं नहीं, तुमने अभी अपना पूरा पोटेंशियल कहां इस्तेमाल किया है, तुमने अभी मुझे कहां बुलाया है इस पत्थर को हटाने के लिए. यू हैव नॉट कॉल्ड मी, यू हैव नॉट यूज्ड माय पावर. और फिर वो दोनों मिलकर उस पत्थर को हटा पाते हैं. द पॉइंट इज कि बच्चा हमारी जिंदगी में, अपनी जिंदगी में जो भी करेगा उसमें आपका कंट्रीब्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. कई बार हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, बच्चा अपने स्कूल भेज दिया, आवर ड्यूटी इज ओवर, आवर जॉब इज ओवर, बट इट इज नॉट सो. यू स्टिल काउंट, योर एफर्ट स्टिल काउंट. ठीक है, बच्चा आपके बगैर इंक्लूजन के भी कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा. एवरीवन बिकम समथिंग और समवन इन हर और हिज ओन लाइफ. लेकिन आपका कंट्रीब्यूशन वहां पे दिखे तो डेफिनेटली वो कुछ और आगे जा सकता था. वो बच्चा अकेला पत्थर नहीं हटा पाया, लेकिन जब फादर ने उसके साथ हाथ जोड़ा तो बोथ ऑफ देम कुड रिप्लेस दैट स्टोन. तो योर कंट्रीब्यूशन, योर जॉइनिंग हैंड विद द स्कूल इज एक्चुअली इक्वली इंपॉर्टेंट. तो आप अपने उस रोल को जरूर समझें कि विद्यालय को आपकी जरूरत है. वी नीड यू. सो never hesitate to come to the school to discuss matter of your child with the teachers. I tell you, in Kendriya Vidyalaya Sangathan, we spent many training hours, lot of money we invest on the training of the teachers and training of our principals, that how to counsel a child, how to help a child to grow and all that. So they are not just like, they are specialized people. So don't hesitate to come to them to discuss the problems with the principal and take their expert advice. होता क्या है, ज्यादातर बार बच्चों के केस में पेरेंट्स सोचते हैं नहीं, वी नो एवरीथिंग. अगर आप ऐसा नहीं सोचते हैं तो ये अच्छी बात है. वैसे तो किसी को भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वी नो एवरीथिंग.